logarithms. I hope in the last lecture you understood the reason for log and why do we need log. And today we are going to learn about logs directly. So one thing that you have to remember whenever we start the topic of log, the basic concept of log का वो आपको याद रहना चाहिए. So the basic concept about log is that you have to have one thing remembered. Log 100 with base 10, it is equal to 2. So what does it mean? 10 to the power of 2 is equal to 100. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ये सिंपल सी चीज आप लोग याद रखें, ठीक है. एंड लॉग विल बी वेरी इजी. जब भी आपको कंफ्यूजन हो लॉग के बारे में, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है. टेन टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग बाकी सारे जो भी लॉज हैं, देयर आर मेनी लॉज ऑफ लॉग, उन सबको हम समझना चाहेंगे, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव लॉग एंड आई एम राइटिंग बेस, अच्छा दो बेस होते हैं तो ये समझ लीजिए. With respect to base, I can divide log into two types. एक होता है natural log जिसका बेस e होता है, और एक होता है common log whose base is 10. So whenever we are using, we want to convert, if there is any natural log e, तो उसको हम लोग log 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, because all the calculations are easy if you have common log 10. ठीक है. Now कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? Please see. Log with base e of anything, let us suppose you have a, this will be equal to 2.303 log with base 10 and log of a with base 10. और जब हम लोग जनरली लिखते हैं इन सब चीजों को ना, तो ऐसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं, ठीक है. ln of a is equal to 2.303, और जब आपने लॉग लिख दिया तो यानी कि बेस 10 हो गया, ठीक है ना. तो कॉमनली यही हम लोग के पास क्या है, ln of a is equal to 2.303 log a, ठीक है. नेक्स्ट आप इतना लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं. ln जब भी होगा तो नेचुरल लॉग की बात हो रही है, और जब व्हेन वी आर राइटिंग लॉग, देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज लॉग विद बेस 10. All of you done writing? Yes or no, please tell me. Is there anyone who is still writing? Please say yes. Is there anyone who is still writing? Please say yes. Okay, fine. No one is writing. Now, let us look at the loss. Loss को समझिएगा बहुत आसानी से. चलिए बताइए. ये ध्यान में रखना सिर्फ है ना. Log of 100 is what? With base 10 it is equal to 2. So 10 to the power 2 is 100. Wait a second. Just 1-2 मिनट रुकेंगे. There is a student who is joining. Okay. So we have just started. 10 to the log, basic understanding of log should be 10 to the power 2 is equal to 100. तो दो चीज होती है, बेस होता है यहाँ पे, this is just a different form of exponents.
बस ये 10 to the power 2 is equal to 100 लिखने का एक अलग फॉर्म है, राइट? सेम थिंग. आपसे यहाँ से स्टार्ट करें? You're a bit late, that's why I'm asking. You have already explained this point. Yes, Hafsa? Yes, sir. Okay, भाई. चलिए अब सब कुछ बताएंगे. When we have log 1000, what will be the value? That means you have to tell 10 to the power how much will be equal to 1000. Tell me, guys. 10 to the power how much will be equal to 1000? 3. 3, right? I hope everyone can answer that. 10 to the power 3. So ये आंसर कितना आ गया? 3 आ गया. Similarly, tell me. Log of we have, let us suppose, one more 0 or two more 0 will be equal to how much? 10 to the power how much is equal to 1 2 3 4 5 ना? कितना हो गया? 1 lakh. Log Hi, of sir. 1 lakh will be equal to how much? It will be equal to 5, right? ठीक है. चलिए उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते थे. Log of 10 to the power 5. Yes or no, please tell me. Yes. This would also be equal to how much? This will also be equal to 5. अच्छा, इसमें देखिए ध्यान से. Can I say that? I can say that it is 5 of log 10. So whenever you have a to the power something, that power will come down और बाकी log आपका वैसी का वैसी बच जाएगा. Now tell me, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? What is log 10? 1. 1 ना? Why? Because 10 to the power how much will be equal to 10? 10 to the power 1 will be equal to 10, right? So this will be equal to 5 into 1 और आपको फिर से वही सेम आंसर आ गया. ठीक है. Now similarly यहाँ पे देखिए, can I write it something like this? Log of 100, ठीक है, log of 100 3 को लिख सकते हैं ऐसे, log of 100 plus log of 10 है ना? Because log of 100 is how much? Log of 100 is 2. Log of 10 is how much? 1. And 2 plus 1 is equal to 3. Correct है guys? Yes or no, please tell me. Yeah. And now similarly, can you see that log of, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1000 को 100 into 10. ठीक है. Now can you see there is again an identity which you can use. यहाँ से हमारे पास multiplicative law आता है, the multiplicative rule. It says that if you have log x into y, ना log xy है आपके पास, x into y, this will be equal to log of x plus log of y. Log of x plus log of y. ठीक है. एक रूल हमने ये सीखा. दूसरा रूल जो हमने ये सीखा, that is if you have log of a to the power x, then this will be equal to x times log a. Correct guys? Yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है. Similarly, as we have multiplicative rule, there is a division rule which says log x divided by y is equal to log of x minus log of y. याद रहेगा हाँ या ना बताएं? Yes. Yes. Okay. Now, similarly, let us suppose we have something like this. अच्छा, log of 1 will be equal to how much? That means you have to ask 10 to the power how much will be equal to 1? 10 to the power 0, right? So log 1 is 0. ये ध्यान रखेंगे. Log 1 base कुछ भी हो जाए आप यहाँ पे ना, base anything, we can write it is equal to what? 0. So we can say that. एक अगला रूल क्या आ गया? Log of 1 is equal to 0, है ना? Base can be anything. अच्छा, यहां से फिर आगे हम लोग अगर चले, अब देखिए log of 1 upon x अगर आ जाए, then what we can write this as log of numerator minus log of denominator. So log of 1 minus log of x. Similarly, which can be simplified into what? Log of 1 is, we know the value is 0. So 0 minus log x. 0 minus log x will be equal to how much? Minus log of x.
तो यहां से आपके पास एक अलग रूल आ गया. क्या रूल आ गया? log of 1 upon x is equal to minus log x. Got it, guys? Yes or no? Please tell me. यहां तक सबको आ गया? हाँ या ना बताएं. Yes, sir. ठीक है, no problem here. Now let me see if I am missing anything else here. Multiplication, division, power 1 and denominator वाला. ठीक है, fine. So these are the laws of log that you have to remember. Please note this down. Is anyone still writing? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा. If you guys have any doubt, please let me know. Done, everyone? Is everyone done? Yes, sir. Okay. Now, next what you have to remember is log from 1 to 10. लेकिन log 1 से लेकर 10 तक आपको बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ प्राइम नंबर के log स्टार्टिंग के याद रहने चाहिए. That's it. Now we already know log of 1 is equal to how much? Tell me, guys. Log of 1 is how much? अरे प्लीज आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग बता देंगे हम क्लास से. Log of 1 is equal to how much? 0. 0. Log 1 is equal to 0. ठीक है. Next, log 2. Log 2 you have to remember. Log 2 is equal to 0.3. Log 2 is equal to 0.3. Then you have to remember log 3 because it is also a prime. Log 3 is equal to 0.48. Log 3 is equal to 0.48. Now tell me who is going to tell me what is log 4? देखिए log 4 कैसे लिख सकते हैं? Log 2 to the power 2. है ना? It can be written in the factors of 2. So I can write this as 2 times log 2, and we know the value of log 2. It is equal to how much? 0.3. So 2 into 0.3 will be equal to 0.6. Got this, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Then we have log 5. Log 5, it is equal to 0.70. ठीक है. Now tell me value of log 6. How can I write this? Log 6 को कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर्स में तोड़िए 6 को. Do prime factorization of 6. What you will get? No one. Deborah, Faiza, Hafsa, Humam, Tarif, Rabah, Rabia, and Saad. Prime factorization of 6. What will you get? लिखिए मत, प्लीज आंसर कीजिए यहाँ पे. अरे बोलो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता? Log 2 into 3. 2 into 3. Now what I can apply? Which rule? Tell me. X into Y rule, right? So it will become what? Log 2 plus log 3. है ना गाइस? yes or no? Please tell me. अरे बोलो भाई. माइक ऑफ करके रखना तो फिर प्लीज मत अटेंड कीजिए क्लास, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. ठीक है. What is log 2? What is log 2? 0.3.
0.3 plus 0.48. 48. What is the value? 0.7. 78. ठीक है. Next, log 7. Now log 7, we cannot do any factorization because 7 is a prime number. So log 7 you have to remember, and it is very easy. You have to just, you have to just flip the digits of log 3. So it will become 0.84. ठीक है, ऐसे याद करना. So क्या क्या याद करने के लिए अभी आपके पास, अब देखिए log 8 है. You all will tell me what is the value of log 8, and you all will tell me what is the value of log 9. I think log 10 का सबको याद होना चाहिए, that it is equal to 1. चलिए, log 8 और log 9 बताएंगे आप लोग, बिकॉज उनका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है. So things you have to remember is log 1 is equal to 0, log 2 is equal to 0.3, log 3 is equal to 0.48. log 1 तो आप इसको डिड्यूस भी कर सकते हैं, डोंट नॉट नीड टू रिमेंबर एक्चुअली, बट याद रहनी चाहिए चीजें. log 1 आपको डिड्यूस ना करना पड़े, आपको याद रहनी चाहिए. ठीक है, log 4 आएगा तो आप डिड्यूस कर लेंगे, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन log 5 याद रहना चाहिए, है ना. सिमिलरली log 7 आपको याद रहना चाहिए. So कितने log याद करने, सिर्फ आपको 4 log याद करने स्टार्टिंग के. उसके बाद जो अगर कभी बड़ा आया कुछ, तो फिर हम बताते क्या करना है. ठीक है, बहुत आसान है याद करना इन 4 log को. सबसे पहले आप लिख लीजिए log 2 और log 5. 0.3, log 5 0.7. फिर लिख लीजिए आप log 3 0.48 और log 7 is equal to 0.84. सही है, वेरी गुड. यस, करेक्ट है फायजा. Rabia, can you please tell me how did you get that value? Rabia, Yes, sir. how did you get log 8? Tell me. Log 2 raised to the power 3. ओके, log, हाँ तो फिर क्या आंसर आएगा बताइए. 0.903. भाई 903 कैसे आएगा? 903, हाँ, 3 इंटू 0.3 कराएंगे तो कितना 903 आएगा. कैलकुलेटर से कर लिया आपने. कैलकुलेटर से किया ना आपने. हाँ राबिया, Yes. खुद से करें प्लीज. बाकी लोग आंसर नहीं आ रहा है. व्हाट हैपेंड? हफ्सा नहीं आ रहा है, रबा, साद, तारीफ, हुमाम, डेबोरा, व्हाट अबाउट यू? यस डेबोरा, आर यू एबल टू डू दिस और यस और नो? अरे बोलो यार, हम भगा देंगे, क्लास नहीं कराएंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस तरह से. आई कांट Yes, हियर sir. यू डेबोरा. टेल मी व्हाट इज द Yes. वैल्यू ऑफ log 9. सेंड टू मी ऑन द जूम चैट. सालिम नाम है मेरा, प्लीज सेंड देयर. साद ने एक भी जवाब नहीं दिया है, तारीफ ने एक भी जवाब नहीं दिया है, हुमाम आल्सो हैव नॉट गिवन एनी आंसर्स.
यस रबा, तो आगे सॉल्व करें ना उनको। रबा दिक्कत हो रही है? No, रबा sir, आर यू I'm गेटिंग doing स्टक? it. No, हाँ sir, तो I'm doing कीजिए। it. हाँ कीजिए, आंसर बताइए आप हमें। हाँ ठीक है, 7 सही है, log 9। यस राबिया करेक्ट, हफ्सा करेक्ट। हाँ ठीक है रबा, अरे आप आंसर बता दीजिए रबा, आप नोटबुक लेके नहीं बैठी हैं क्या? सारा कैलकुलेशन आप चैट में कर रहे हैं। रबा आंसर बता दीजिए आप, कितना आ रहा है? चलिए सही। सो log 9 इज 0.96। जो एक्यूरेट आंसर, आई मीन जो एक्यूरेट वैल्यूज हैं इनकी ना थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेंगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट 0.70 एग्जैक्टली, दिस इज 0.69, है ना। लेकिन आसानी के लिए हमने क्या किया, 0.70 वगैरह लेके रखे, ताकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लिया है ना। वी हैव डन जस्ट अप्रोक्सीमेशन। उसमें बस एक दिक्कत ये हुई log 9 के टाइम। तो व्हेन आई टेक log, if you see log 3, the actual value for log 3 is 0.4777 इस तरह से, ठीक है। Now if you are going to double this number, if you are going to double this number, then it is going to be how much? This will come out to be approximately 0.954, ठीक है। और log 9 आपको 0.96 मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है जरूर, ठीक है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज कैलकुलेटर तो है ना, और बिल्कुल एक्यूरेटली तो याद रखने की चीजें ये सारे हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट this may not be given to you in some of the question in board examination, but board examination में almost सारे question में जहां पे भी log की values लगती हैं, they always give the values of log, ठीक है। they always give the values of log, they don't give the values of log if you have log 10 to the power something, है ना। अच्छा उसी तरह से मान लीजिए if you have something like this, evaluate the following, write the question, evaluate the following. For example, you have log 10 to the power, you have log 0.001, 0.001, तो क्या करेंगे इसको, we'll convert this 10 to the power, this will be log 10 to the power minus 3, है ना। So this will become how much, minus 3 into log 10, which will be equal to how much, minus 3, ठीक है। अब इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम इनको इवैल्यूएट कीजिए। log 0.01 divided by 0.001, log of 10 to the power 3 divided by 0.0001, log of 0.001 divided by 10 to the power 3, log of 0.001 divided by 10 to the power minus 3। चलिए 5 log, बाकी 4 है, ये सॉल्व। log of 10 to the power 2 into 10 to the power 3 divided by 0.001। पहले आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप log की वैल्यू निकाल लीजिए।
Sir, I have sent you the answer in the chat column. Okay, fine, Ruba. We'll see that. First one is correct. Second one is 1, 2, 3, 4. Yes, correct. And you want to try the fourth one once again? Please check the fourth one. Okay, sir. Also check the fifth one. फोर्थ एंड फिफ्थ चेक कीजिएगा रबा. I got the mistake, sir. I wrote 1 0 extra. फायजा फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड सही नहीं लग रहा हमें तो. सेकंड इज नॉट करेक्ट. कुछ आपने मिस्टेक कर दिया वहां पे. ठीक है, सेकंड वाला अपना सही. नहीं, सेकंड सही है, थर्ड वाला सही नहीं है. फोर्थ इज एक सेकंड. सेकंड आपके पास आपने लिखा है. सेकंड इज गोइंग टू बी. हाँ, सेकंड सही है, थर्ड सही नहीं है. फोर्थ सही है. फिफ्थ सही है. सिक्स्थ लेट मी सी फायजा. सिक्स्थ इज नॉट करेक्ट आई थिंक. करेक्ट है क्या सिक्स्थ? हाँ, सिक्स्थ इज आल्सो करेक्ट फायजा. या वेरी गुड फायजा. थर्ड सही नहीं है आपका. थर्ड देखिए क्या गलती कर दिया आपने. थर्ड में कुछ तो भारी मिस्टेक कर दिया आपने. व्हाट अबाउट अदर्स? हफ्सा, डेबोरा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, रबा सही है. सिक्स्थ वाला सही है. नॉट गेटिंग द फिफ्थ वन. क्यों? क्या आया? इसको सॉल्व कीजिए. फ्रैक्शन सॉल्व करके कितना आया? फ्रैक्शन सॉल्व करके कितना आया? फोर्थ वन. हाँ, फोर्थ वाला आप सही है फायजा. रबा, टेल मी व्हाट डिड यू गेट आफ्टर सॉल्विंग द फ्रैक्शन? Sir, I am doing it by the question rule, log question rule. What? नहीं, क्वोशिएंट लॉ नहीं, पहले फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए ना. पहले फ्रैक्शन सॉल्व हो सकता है ना. ये तो जहां फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो पाए ना, जब को प्राइम आ जाए. आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज को प्राइम. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आए लॉग ऑफ, लेट अस सपोज यू हैव 4/6 और लेट अस सपोज यू हैव 4/2. तो आप ऐसे तो ना कीजिएगा log 4 माइनस log 2. ऐसे नहीं करना ना. पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. कितना आ गया? log 2 आ जाएगा. ठीक है. So solve the fractions first. That is why I think you are just taking so much time. आप देखिए यहाँ पे इन दोनों को 10 के पावर्स में लिख लेते हैं. हाँ, तो log 1 कितना हो जाएगा?
log 1 कितना हो जाएगा बताएं? Okay, what's the value of log 1? I forget. You forgot, आपने लिखा नहीं है? No, sir, I took the screenshot. स्क्रीनशॉट थी तो बताइए क्या होगी log 1 की वैल्यू? थोड़ा सोचिए ना, हम लोगों ने जो रूल पढ़ा है log होता क्या है आपको तो वो पता है, ठीक है, उस हिसाब से सोचिए। बाकी लोग देखें यहाँ पे, it's going to be log, I can write 0.01 as 10 to the power minus 2 and this has 10 to the power minus 3, right? So ये हो Is जाएगा it आपके पास log, हाँ बताएं रबा। Is it 0? Yeah, correct. So this will be equal to how much? Log of 10 to the power 1. तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा ना, 1 into log 10 will be equal to 1. Now when I see this is log 10 to the power 3 and this is log 10 to the power minus 4. So it will become log 10 to the power 3 into log 10 to the power plus 4 because it is coming up. So it will become log 10 to the power 7 and it will be equal to 7 into log 10. Log 10 is equal to 1. Then we have fourth one. This will be log 10 to the power minus 3. This will be log 10 to the power 3. This will become log 10 to the power minus 3 into log 10 to the power minus 3 because denominator is plus 3. It will go above and it will become what? Minus 3. Now this will be equal to how much? Log 10 to the power minus 6, right? Yeah. Log 10 to the power minus 6. Log की power लिख दिया हमने. Log 10 to the power minus 6. It will be equal to what? Minus 6. Then we have log 10 to the power minus 3 divided by log, here also 10 to the power minus 3. This will become log 1 because 10 to the power upon 10 to the power minus 3 will be equal to 1. So log 1 is equal to 0. Then we have log 10 to the power 2 into 3. Now 0.001 will be 10 to the power minus 3. It will go above and it will become 10 to the power plus 3. So this will 3 plus 3 is 6 plus 2, 8. So log 10 to the power 8, which will become 8. अरे आया नहीं आया? All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, तो ये 10 के पावर्स में बहुत हेल्पफुल होगा दोस्त ऑफ यू जितने भी लोग 12th स्टैंडर्ड में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, आई होप यू कैन सी दैट आल्सो। जब कंसंट्रेशन वगैरह होते हैं, नस्ट इक्वेशन लगाना होता है, देन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। चलिए नेक्स्ट लेट अस लुक एट व्हेन वी हैव द वैल्यूज ऑफ लॉग इन नॉट इन 10 to the powers but rather it is something like this. Write the question, simplify the following. Simplify the following. Now let us suppose you have log of 48. अच्छा, log of 48 वगैरह से पहले ना हम ये कर लेते हैं थोड़ा log of decimals कर लेते हैं पहले, ठीक है ना? अभी हम लोग डेसिमल से आए हैं ना, तो डेसिमल्स कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल यू हैव log of 1.5, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको आप पहले कन्वर्ट कीजिए, log of, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। सो 15/10, नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? log of, सो 1.5 अभी मत कीजिए, 1.4 कीजिए आप। ये 15 भी कर सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं था 15 में। 15 इज आल्सो can be factorized, it is not a prime number. So क्या लिख सकते हैं इसको? log 15 minus log 10, है ना? अच्छा, log 15 को क्या लिख सकते हैं? log of 3 into 5 minus log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और log 3 into 5 will be equal to what? log 3 plus log 5 minus 1. कितना आ जाएगा? log 3 बताएं। log 3 is equal to 0.48 plus log 5 is 0.7 minus 1, ठीक है? आंसर बताइए कितना आ जाएगा? तो बात समझ में आई सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, थोड़ा लंबा है प्रोसेस, अभी आपको लग रहा होगा, बट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो चीजें आपको दिखने लगेंगी, है ना? आप सीधा इसका लिख देंगे 115 है तो 15 है, तो जितना डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने आपका -1 आ जाएगा। अगर 52 रहता तो -2 हो जाता। देखिएगा आप अभी, ठीक है? अभी आप देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रिक्स धीरे धीरे आएंगे, पहले कीजिए इनको। लॉन्ग मेथड आना चाहिए पहले। Sir, is it 0. अरे 0 पॉइंट कैसे हो जाएगा भाई? 0 पॉइंट हो जाएगा? हाँ 0 पॉइंट हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ठीक।
7 + 4 is going to be how much? 11. It will be 1.18 ना, 1.18 -1 कितना आ गया? 0.18 आ गया ना. 0.2 कैसे होगा? It's a round figure, sorry. राउंड फिगर इतना राउंड मत कीजिए प्लीज. ये खुद राउंड होके आया. अगर आपको याद हो कि 3 और 5 जो है ना, हम लोगों ने राउंड ही लिया था. ठीक है, इतना राउंड फिगर ना करें प्लीज. दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी एक्यूरेट. जो log 1.5 है ना, अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे, इट इज गोइंग टू बी अराउंड आई थिंक 0.175 या 6 के करीब कुछ होगा. ठीक है, डन एवरीवन? यस और नो प्लीज टेल मी. आगे सबको हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया कि इफ यू हैव लार्जर नंबर आल्सो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट फैक्टराइज इट, है ना. अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स. आप आंसर्स देखते जाएंगे प्लीज, है ना. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव, लेट अस सपोज समथिंग लाइक दिस, log of 0.00015. ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास आ जाए ना, किसी 0.0015, यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका देखिए आप. पैटर्न देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. आई कैन राइट दिस एज log of 15 into डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5. 5 नंबर है, देन मींस इट इज 10 to the power -5. हाँ या ना? बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है, अब इसको क्या करना? सेम थिंग, log of 15. now this will be equal to how much? बताएं. this will be equal to how much? plus log of 10 to the power -5. ठीक है, ये log 15 को आप ऐसे लिखिए, log 15 plus 10 to the power -5 will be equal to how much? -5 into log 10, है ना. log 10 की वैल्यू 0. बेसिकली आपका क्या आ गया? log of 0.00015 is equal to log 15 -5. और ये 5 क्या है? 1 2 3 4 5. इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो ये स्टेप्स अब आपको नहीं करने पड़ेंगे. समझ में आ रही है ना? बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है, अब सब कुछ सिंपली हमें बताएंगे. सिंपली ये बताइए व्हाट विल बी द, ये सिंप्लीफिकेशन करना है सिर्फ. ठीक है, log 15 का तो निकाल लेंगे. नाउ इफ यू हैव लेट अस सपोज log ऑफ 0.00, लेट अस सपोज यू हैव 28, तो क्या हो जाएगा? log 28 माइनस हाउ मच? log 28 माइनस, अरे बोलो भाई, नहीं आया, नहीं आया. -4. log 28 -4 ना. 4. डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं आपके पास नंबर्स? 1 2 3 4. ठीक है, उसी तरह से देखिए, log इफ यू हैव 0.036, क्या जाएगा? log 36 3. -3. और आपको कुछ और आसान आ गया, मान लीजिए log 2.5 into 10 to the power -4. अब क्या करेंगे बताइए, कितना हो जाएगा? log 25 माइनस कितना होगा बताएं, थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा. गाइस टेल मी. नहीं आ रहा किसी को? अरे भाई ऐसा ना करे ना. 5. हाउ मच? टेल मी वंस अगेन. Sir, 5. हाँ 5 होगा. वाई सी 10 to the power -4, तो -4 ऐसे ही हो जाएगा. और यहाँ पे वी हैव 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो कितना हो गया? 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया. ठीक है, चलिए प्लीज इसको लिख लें और सबका आंसर बताएं कितना आ रहा है.
यस 7 करेक्ट। चलिए सबका आंसर बताइए कितना आ रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गेन्ड क्लैरिटी अपॉन लॉग्स नाउ, है ना। आप लॉग देख के घबराएंगे नहीं, हाँ या ना। फायजा, हफ्सा, हुमाम, तारीफ, देबोरा, राबिया, अंसाद, रबा, सब बताएं। Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. है ना। अब लॉग देख के डरिएगा मत। चलिए व्हाई कैन यू लीव, अरे भाई सवाल तो करें, आंसर्स तो बताएं। 7 को घर जाना है। आंसर्स बताइए इसका कितना आएगा, लॉग सॉल्व कीजिए सबको, फैक्टराइज कीजिए 28 का, 36 का, 25 का। Send your answers in chat, even if you got for 1, 2, or 3, anyone. Yes. Correct, Faiza. First one is correct. Second one, yeah, fine. Second one is also correct. Third one, हाँ जी सही है.
Fourth one is also correct. Very good. What about others? Is anyone stuck? Tell me now. Is anyone stuck here? Deborah, Hafsa, Humam, Tarif, Rabah, Rabia, and Saad. Let me know if you are getting stuck. No one is stuck और किसी का आंसर भी नहीं आ रहा है. Send me the first answer at least all of you. Deborah, Faiza, Hafsa, Humam, Tarif, and Rabah and Rabia. हाँ जी, फर्स्ट सही है. राबिया करेक्ट. नहीं, रबा पहला सही. नहीं 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 नहीं, हफ्सा आपका बहुत गलत आ रहा है. ओ माय गॉड. हफ्सा, log 15 कितना आया आपका? टेल मी. हफ्सा प्लीज आप माइक ऑन करें. Yes, sir. log 15 कितना आया? 1.1, 1.18. 1.18. -5 करेंगे तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा ना. Sir, I did minus log 5. That's the problem. y - log 5 तो हमने लिखा हुआ, उस पर भी आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी. Yes, sir. ठीक है, तो जल्दी कर ले, है ना. बस आपने ये सारे वैल्यूज अगर सही निकाले हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी. रबा हैज गॉट नाउ. हाँ, रबा अब सही है. ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट. राबिया का सही था पहला वाला. रबा सही है. चलिए. हाँ ठीक है, तारीफ, आपका आंसर सही आ रहा है. I'm writing the answers, है ना. So this will be -3.82. This is going to be -2.66 around. 5 भी आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं. इसके आसपास आना चाहिए आंसर्स. Not very accurate answers you are going to get. And at last you are going to get -3.6. Sir, minus 3.82 is for the first answer, right? My bad. This is -2.66. Second one, I think this is -1.44 or 54, something like that, no? -1.54. This is -3.82.